I'm really sorry all the videos of mine are ending so abruptly because something or the other is happening and then I have to abruptly end my video. I'm sorry if it is causing a little amount of hindrance to you, but it's okay. Just enjoy the video. How much ever you're feeling to watch, you can just watch. It's just, for fun sake and for from a very friendly perspective, because I felt very depressed and I felt too upset when I joined a residency, and I don't want my friends to feel the same way, so I just want to help them the way I can. I know, you will be alone because in a medical college you'll be with a group of friends, and suddenly you'll be like so drifted apart from everybody, and you'll be like, oh my god, I don't know what to do, but soon everything will be falling in place. Okay, so I was talking about the cannulation, right? So cannulation की videos देख लेना एक बार. पीडियाट्रिक कैनुलेशन, एडल्ट कैनुलेशन, ओल्डर एज में कैसे कैनुलेशन करना है, डिफिकल्ट कैनुलेशन है तो कैसे करना है. देर आर गुड वीडियोज बाय नाइजोरा, यू कैन वॉच देम. You can watch many other videos. There are lots of resources these days available. Don't be afraid about the resources. Okay, everything you'll get easily without paying any amount of money. Don't just run before any apps or books. Just take some time and observe, and then according to your needs you can of course take whatever you want, but just first understand that what are your needs. And also, the second thing that I would like to say, always think about the whys in the house. Okay, you will be like, see, you can stand there and you can do all the daydreaming. Okay, but instead of standing in the OT, just think that, oh, why is this happening, why is that happening. And you can also ask your senior, but just look out at a normal time when the patient or the situation is not very serious, because see, even the seniors are ready to help you, but what happens is they will be busy, because we are not aware about the situation, but they are quite aware, and then they are busy in managing the patients, and then if we poke in them, then they will be little irritated. So just find a little quiet time when they are at peace, and if they are when they are a little friendly with you, if they've started interacting with you, then you can ask a little all your whys in house, that why are you doing this, why are you switching off the air conditioner at the specific time, why are you switching on the light at the specific time, what and all the small things you're doing. These things will make a lot of difference with time. Your things will accumulate, and it will have a difference. So keep your whys in house with you. If you forget your questions, you can carry a diary with you, and also you can keep revising and keep writing all these things, all your experiences in your diary, because later on, after a few months, when you sometimes forget your diaries and all, sometimes you will forget your diaries, so at that time you'll be like, oh, and later on if you revisit your diary, and then you'll feel very happy and nostalgic that, wow, I tried all these small little steps to improve myself. It feels very good to improve yourself mentally, emotionally, academically. Slowly and steadily, you will be able to change. You will be a kid at the time you'll be entering your residency, and then within a few months you will learn so many things about the psychology, about the physiology, about the pathology, about the pharmacology. So many practical things. You'll be really amazed, and you will feel that feeling of a doctor that comes for the first time. It will be very satisfying for you. Okay, so we also need to focus on the positive aspects of the residency and not just the negative aspects. The next thing that I would like to say is, please don't forget to have your breakfast before you go to residency, because see, residency में क्या है कि it is a heavy duty demanding time. Any field in MD, I don't just say about my own field, be it any field, it will be really very hectic. So you have to have your breakfast, because tuberculosis is a very high prevalent disease in our country, and if you are empty stomach, there are high chances that you might counter with that disease. And here usually the patients are XDR or MDR TB, so you can't afford to lose your quality of life like that. So I suggest you and I request you to have your breakfast daily. I mean, even if you don't feel, and even if you're not habitual, try to make a habit. Since you are new, you whatever type you want to mold yourself, it will be easier now than later. अभी क्या habits नहीं बनी है तो बन जाएंगे, अभी तो बना लेना. और दूसरी चीज़, हाँ, इन OT नो you will be now having to stand for long hours, especially in anesthesia. You have to stand for long hours, like for 12 hours, 18 hours. Okay, so 8 hours तो है ही मिनिमम. मतलब तो 8 hours खड़े होने का इनिशियली किसी को भी नहीं होता है यार. ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हें पैर में दर्द हो रहा है, होता है, सबको होता है. एंड I know it is very difficult and upsetting also.
So with time, it needs practice. And also you can just massage your calf muscles from toes to the knees in that direction, so that the blood flow can remain steady. You just place your foot in some warm water, and just take some nice deep breaths. It will just relax you from inside, and also it will help you relieve your leg pain. Also you can elevate your foot while sleeping. I tried a few of these things for few of the times, obviously not daily, but these things are nice, and they make you a little happy in your new journey. So I think you can try these things. Next क्या था, second, हाँ अभी क्या है कि पैनिक नहीं करना है अपने को, बिकॉज वील बी सीइंग वेरियस सिचुएशंस, और वो मेरे बोलने से तो नहीं होगा, वो तो आप पैनिक करोगे ही। मतलब हर कोई कर जाता है यार पैनिक, बट ठीक है, अब हमें हैबिट डालना है कि हमको पैनिक नहीं करना है, अपने आप को वॉलेंट्रीली समझाना है। वी हैव टू टीच आवर सेल्व्स वॉलेंट्रीली टू ट्राई टू स्टार्ट ट्रेनिंग योर सेल्फ टू बी काम इन द डेंजरस सिचुएशंस। ओके, वो इनिशियली हमें ट्रेन करना पड़ेगा, फिर हमें धीरे धीरे ट्रेनिंग हो जाएगी। उसके बाद मैंने क्या लिखा है, हाँ OT है। OT इज़ अ वेरी स्टेराइल एनवायरनमेंट। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड द फर्स्ट mistake that every resident does, be it surgery, ortho or anesthesia, is the thing that वो है ना अपना स्टेराइल फील्ड को हाथ लगाता है। हमने सबने किया है और हमने सबने डांट भी खाई है, और मतलब शायद आगे भी सारे रेजिडेंट्स ऐसा करते रहेंगे। एंड देयर इज़ नो shame in committing mistakes. I mean, it feels a little embarrassing, but don't worry, it will be fine. Just try that whatever is green around you, it is the sterile, the OT, the trolley that is covered by a green cloth, the surgeon who is wearing a green gown, the patient who is covered in the green towel or whatever sheet, and whatever is said that okay, this is a sterile thing, the instruments, okay. इफ़ समवन सेज दैट मैं वॉश्ड हूँ, तो उसको मतलब टच मत करना। उसको कोई ना बहुत इमरजेंसी हो जाती है, तो वी फील दैट ओ आई नीड टू हेल्प द पर्सन, यू आर डूइंग इट आउट फॉर गुड इंटेंशन, बट देन you just hold on to some forceps which was kept in the sterile trolley table, and then you give it to your surgeon or whatever, and then everyone looks at you. So I mean, just I know such things, even if I say you might do it, but it's okay. Even if you do, don't just start to leave the branch and everything. It will be okay, fine. I actually I'm so deeply connected that I just want my batchmates to be in such a comfort zone that they should be like okay, I have some support. तो इसलिए मैं बता रही हूँ ये सब। और उसके बाद अपने डेली प्लान कर लेना कि यार मुझे ना आज ये देखना है। जो भी कल के OT केसेस हैं, हमको OT के केसेस पता लग जाते हैं, या जो भी इमरजेंसी में चल रहा है या ICU में चल रहा है, हमको वो पता लग जाता है कहीं ना कहीं से। यू विल बी सून एडेड इनटू योर ग्रुप्स एंड ऑल। सो जस्ट try to familiarize yourself with the names of the procedures and all, and then just start from the very very basic things. तो IV ड्रिप जैसे बनाना बोला मैंने, देन OT टेबल प्रिपरेशन हो गया, देन कैनुलेशन हो गया, देन हाउ टू अटैच द मॉनिटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें भी मिस्टेक्स होती हैं, और हम किसी से भी होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर से हो रही है सेकेंड ईयर, मतलब ऐसा कुछ इंसान से गलतियाँ होती हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यार उससे हो गया मुझसे नहीं हुआ, या ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट ट्राई टू मेक मिनिमल अमाउंट ऑफ मिस्टेक्स। कहाँ पे क्या लगाना है, ECG इलेक्ट्रोड्स कैसे लगाना है, पल्स ऑक्स कहाँ पे फिट करना है, एंड जस्ट ट्राई टू डिटेंगल ऑल द वायर्स। इट्स जस्ट लाइक इट्स जस्ट लाइक अ गेम। जस्ट टेक इट एज अ गेम कि यार मुझे है ना ये जगह को साफ रखना है, दिस इज़ माई पर्पज एंड दिस इज़ द गेम दैट आई एम प्लेइंग। और यू कैन कंसिडर इट एज योर किचन। किचन में कैसे करते हैं हम, बहुत साफ रखते हैं, हर चीज़ बहुत क्लीन एंड नीट, सो दैट एवरीथिंग विल बी एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सेसिबल। कि हमें जैसे ही चाहिए वो चीज़ हमको मिल जाए, है ना। तो वैसे ही हमको वो जगह भी रखनी है साफ क्यूट क्लीन, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्यूट क्लीन से ज़्यादा मतलब एक्सेसिबल सामान भी होना चाहिए वहाँ। ऐसा नहीं कि बस सब कुछ ही साफ़ कर दिया ना, ऐसा नहीं करना। तो ये सब करना। और क्या बताना था, मॉनिटर का अटैचमेंट था, टेबल, हाँ। फिर थोड़े ड्रग्स भी देखना शुरू कर देना, वहाँ पे क्या क्या ड्रग्स रखे हैं, किस ऑर्डर में वो ड्रग्स रखे हैं, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है ना, वो किस कलर के हैं, कि डार्क कलर के हैं या फिर वो लाइट कलर के बॉटल में रखे हैं, वो किस
वाइट कलर के हैं या वो पाउडर्ड हैं, वो किस तरीके के दिख रहे हैं, है ना, उनको कैसे बना रहे हैं, डेक्सट्रोज में डाल के बना रहे हैं कि नॉर्मल सलाइन में बना रहे हैं कि आरएल में डाल रहे हैं, है ना, क्या ड्रिप लगा रहे हैं पेशेंट को, व्हाट ड्रिप्स दे आर यूजिंग, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करने की है यूरो बैग, उसमें कोई भी शेम नहीं होनी चाहिए। यू नो समटाइम्स यू फील दैट ओ आई जस्ट क्रैक नीट पीजी एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, व्हाई दे आर आस्किंग मी टू टच द यूरो बैग ऑफ द पेशेंट, एंड यू नो इट such feelings do come. But then see, this is very important because you are indirectly assessing the perfusion of renal artery and you're assessing the perfusion of the organ. This is a very good method to see whether a patient is in shock or not. So it is a very good weapon for you. तो फिर इसमें देखनी, ये सब भी मॉनिटर करने का देखना, छोटा छोटा सामान जो है। मुझे भी जैसे जैसे याद आता जाएगा ना, मैं लिस्ट बनाती जाऊँगी कि क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो मुझे लगता है। ऑब्वियसली हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओन पर्सपेक्टिव, इवन आई एम इन अ फेज ऑफ लर्निंग एंड देर इज़ अ माइल्स, यू नो देर आर माइल्स टू गो फॉर मी ऑल्सो। आई एम रियली अ स्टूडेंट एंड आई थिंक आई विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट, है ना। तो मैं भी पढ़ ही रही हूँ यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे अपना जो छोटे मोटे मुझे पता है वो मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ, है ना। सो आई होप दीज वीडियोज़ हेल्प यू, और बाकी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कीप आस्किंग मी। बाय।